Varangi is a busy industrial area in Karachi. It is home to a low-income population. When disaster strikes, where are they to go? Hassan is a worker who suffered serious injuries due to an accident at work. मिस्त्री का काम करता हूँ, ऊपर पांच पर से पार्टी पर से गिर गया चादरों के अंदर और किराए के घर में रहते हैं, अपने प्राइवेट करा नहीं सकते इलाज, डायरेक्ट यहीं आया हूँ, स्टार्टिंग यहीं आया हूँ। माशाल्लाह से देखभाल अच्छी हो रही है, ट्रीटमेंट अच्छी कर रहे हैं ये लोग। Anas is a 4-year-old with a difference. When he was just 2 months old, he was treated for a minor illness at a children's hospital, but contracted a serious infection. मेरे बेटे का नाम अनस है। ये 2 महीने के थे जब से इंडस में आ रहे हैं, तो आज ये 4 साल के हो गए और इनका इलाज इंडस में ही चल रहा है। और बेहतरीन अस्पताल है इंडस, हमारे लिए तो समझ लो एक बहुत ही अच्छा अस्पताल है। और यहाँ का अमला भी माशाल्लाह बहुत कोऑपरेट करता है हर किस्म से। हमारी तो ऐसी जॉब ऐसी है नहीं कि हम प्राइवेट का सरकारी भी नहीं करा सकते थे, क्योंकि मैं हमको डेली वेजेस पे काम करने वाले मुलाजिम में कभी 300 की लग गई, कभी नहीं लगी, कभी 250 की लग गई दिहाड़ी पर। इसलिए इंडस समझ लो एक मौजज़ा है हमारे लिए, एक इंडस। When we set this hospital up, we were very clear that we would want a place where we ourselves, if need be, would be able to go. So the quality has been maintained. We are providing all sorts of services here, starting from as little as a small hernia operation to as large as an open heart surgery, angioplasties and joint replacement, all types of cancer surgeries, medical problems are being dealt, infectious diseases, a whole spectrum of diseases are being taken care of here. The interesting and the really good thing about it is everything is free of cost and to the highest caliber of care delivery that could be possibly be given. अगर हम ये कहीं और इलाज कराते, घर क्या हमारा सब कुछ बिक जाता, फिर भी इतना नहीं हम अफोर्ड ही नहीं कर सकते, इतना इलाज हमारे पास पैसे ही नहीं था। लाखों में ये इलाज इसका पहुंच गया और इंडस वाले ने जो माशाल्लाह ये किया, मैं तो बहुत दाद देती हूँ। The hospital lives up to the expectations of those in need. जो हम तो भाई उधर तरफ मर जाते, इधर आने के बाद हम शफा मिलती है, तंदुरुस्ती मिलती है। ये अल्लाह का बड़ा फजल है। हम इन अस्पताल को दुआ करते हैं ताकि क़यामत तक चली रहे, हम जैसे मरीजों का शफा मिल जाए। The most remarkable thing about the hospital is that money never changes hands. All diagnostic and treatment facilities are absolutely free of cost. How then does the hospital manage to function? It is totally run by philanthropic support from donors, and the cost at this time of 150-bedded hospital, running the 150-bedded hospital is about 5 crore rupees a month. But it is going to increase. To run this hospital, it appears that a lot of money is required, but it's very simple to run this hospital. What we need is 100,000 people giving 1,000 rupees a month on a regular basis for 5 years. After that, we will not be needing any money because it will create an endowment which will regenerate funds for running this hospital. Touching people's lives, working for change. Indus Hospital.